फ्यूचर में अगर 15 से 20 लाख का पैकेज चाहिए तो इस एक चीज को ध्यान में रखो और वो है अपस्किलिंग। अब हर जगह पे एआई आ रहा है, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज की बुक्स हमको टॉर्टोइज की स्पीड पे पढ़ना सिखा रही है। वहाँ इम्पोर्टेंट है कि आप रैबिट बनो और बीच में ना ही कोई स्लीप लो और इस वर्ल्ड के विनर बन के दिखाओ। एंड आपको विनर बनाने के लिए हियर आर 5 वेबसाइट दैट विल हेल्प यू टू अपग्रेड इन योर लाइफ। The first we have on our list is fs.blog. This website talks about topics like accelerated learning and decision-making mental models. इसके साथ they also feature a podcast and time-to-time newsletter जो हर बार curate होता है. If you use the Apple podcast, इनका पॉडकास्ट इसका नाम है द नॉलेज प्रोजेक्ट, उसको जरूर चेकआउट करना. It covers a wide range of topics like problem solving, better living and thinking. And this podcast hosts a lot of doctors, researchers, psychologists that help us understand the mundane problems of our life. And this is not it. अगर आप books पढ़ना ज़्यादा prefer करते हो over listening to podcast या फिर videos, then they also have a provision for you. So make sure you read about the great mental model. ये 3 volumes में divided है, which covers essential models and system. अगर आपको ये website का content पसंद आए तो without a doubt आप इनकी प्रीमियम कंटेंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. Besides all of this, they also offer courses like Rethink Parenting, Decision by Design and a lot more. जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, but it still tops our list because coding is now becoming a very important function in our life. Free code camp की वीडियो जितनी अच्छे YouTube पे होती है, उनकी वेबसाइट तो बिल्कुल वैसी ही है. अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, then Free Code Camp is the best website for you guys. Because unlike other courses या other websites, आपको Free Code Camp का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप इनके दिए हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हो. सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी में जितनी भी लैंग्वेजेस हो या फिर बैकएंड या फ्रंट एंड का काम, पाइथन, जावा या कोई भी और लैंग्वेज, ये सारी की सारी अवेलेबल है विदाउट एनी सब. द बेस्ट पार्ट इज यू आर टेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर यू कंप्लीट दैट वीडियो. अगर आप मेन्यू में क्लिक करो, then you will find a tab on forum news where you will get all the updates and drop your queries just like Reddit. To start coding, all you have to do is create your account with your GitHub or Google account to save your progress as you move forward. When everyone is moving online, building a space that is very exquisite yet practical is not easy. But if designing is what you are passionate about, then आपको UX बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. You can learn UI designing, assess your knowledge, and interact with designers across the globe all in one single space. You can start with the introduction to the UI design, then move to the intermediate level followed by the advanced level. और आप जैसे जैसे थ्योरी को कंप्लीट करोगे, at the end of the course you will find a start lesson button जहाँ पे आप exercises भी कंप्लीट कर सकते हो. और ये यहीं पे खत्म नहीं होता है. It also has the skill test tab where you will get to test your skills under the categories like color, accessibility, details, typography and a lot more. And you get the access to the skill tab on sign up. And on completing the test, you can check your score and also share it on your social media. It also comes with a dozen other features. तो अगर आप अपनी टीम को UI सिखा रहे हो, then you can keep a track of all your employees. How better are they performing and when were they last active? And all other important timelines are covered. Say goodbye to all the questions you made, because इसमें शेयर असेसमेंट का भी एक ऑप्शन है. दिस यू कैन यूज व्हेन यू वांट टू टेस्ट समवन स्किल्स, जब आप किसी को हायर कर रहे हो. एंड इफ दिस इज नॉट इनफ फॉर यू, देन आप अपने स्किल्स के स्कोर्स को वर्ल्ड वाइड स्कोर बोर्ड पे भी चेक कर सकते हो. बट हाँ, ये सारे के सारे फीचर्स UXL के पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल में ही है. But if you are an individual and you think that UI design is something that I like to do, then you can go for the free model, जो आपको free lessons और design skills को assess करने का option दे देगा. Next जो website हमारी लिस्ट पे है, वो पहली बार में बहुत ही ज्यादा confusing लगेगी और दूसरी बार में बिल्कुल लगेगी ट्विटर के जैसे. 50 Hacks is a website where you do not need an account to say what you want. Just like on Twitter we tweet, 50 Hacks पे आप अपने हैक्स को ट्वीट की तरह लिख सकते हो. पर यार आप सोचोगे, हाउ इज दिस अ प्रोडक्टिव वेबसाइट एंड व्हाई शुड आई पोस्ट हियर? इन दैट केस हियर इज आवर ग्रो प्लस टिप. 50 हैक्स पे जब आप कुछ पोस्ट करते हो, यू गेट द ऑप्शन टू शेयर योर ट्विटर हैंडल.
And in case the visitors find your hack useful, there is a very high chance that they follow you on Twitter. Also add comments on any hack that you like. All you have to do is click on new hack in the top left hand corner and add everything in the dialog box. It is quite interesting here because you do not know what you will find next. पर आप जितनी बार भी इसको खोलोगे, you will always find something new to read. The last website on the list is simple, elegant and sophisticated. The website has a free PDF and a e.pub version of the book, The Almanac of Naval Ravikant. Quite interestingly, this book is also the #1 seller on Amazon. ये book के author that is Naval, उन्होंने essays जो past decade में लिखे हैं, उनको illustrations के through curate किया है. It is a free to read and share book which talks about understanding how wealth is created, business is built and explores happiness from various angles. जैसे कि how is happiness learned? Happiness is a choice and why does happiness requires peace? It also talks about some philosophy and how one should consider oneself important and the ways to grow yourself. You can also subscribe to the newsletter of the author for the new updates. We hope कि अगली बार जब आप सोचो कि यार क्या करूं, you will have these 5 options to choose from. For more content like this, like, share and subscribe to our Groww Plus channel.